मुशाहिद साहब, पर some is saying कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया या है अभी भी, बिकॉज उसको रिप्लेस करने के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे हैं इस वक्त? एक ऑर्डर गिर गया है, दूसरा ऑर्डर है नहीं सामने, तो ये कहाँ पे खड़े हैं? एक तो क्लियर हो गया कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, जो लोगों ने कहा था कि पिछले 100 सालों में क्या हुआ है। पहले थी कि ये ब्रिटिश का कॉलोनियल पीरियड था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गया। ठीक, कॉलोनाइजेशन का पीरियड, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द अमेरिकन सेंचुरी हैज बिगन। अब अमेरिकन सुपर पावर है। द अमेरिकन सेंचुरी एंडेड ऑन 15th August 2021 when they were evicted from Kabul in a humiliating manner. वो उस दिन अमेरिकन वो हुई जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, द डॉन ऑफ द एशियन सेंचुरी। तो दैट इज स्पीयर हेडेड बाय चाइना। वो अब इमर्ज कर रहा है और अमेरिका ने कोल्ड वॉर की कोशिश की। ट्रंप को एक बड़ा रियलिस्टिक आदमी है। एक तो ट्रंप ने पूरा एक्सपोज कर दिया अमेरिकन सिस्टम में कितना करप्शन है, कितनी गड़बड़ है। You're pro Trump. है? You're pro I'm Trump. an admirer of Trump. You aren't. No, I admire Trump No. because दबंग आदमी. He has taken on the deep state of the most powerful country in the world and You don't defeated support them. Trump. And defeated them in the elections. If you have a choice between Trump and Kamala Harris, I would never support Trump. I would never support Harris. I wrote an article about this. okay. I said basically that both are No, comparatively. Comparatively, we could not support Harris because of the genocide. So this is on principle, Ken. And Trump, it's not about what he represents against Harris. He's also deeply Islamophobe. He's the one who actually turned Jerusalem and the Golan Heights to Israel. He brought into the so-called deal of the century. He's the worst president when it comes to Palestinian rights and Palestinian cause. He has caused tremendous damage to Muslims in America. And he does not actually, he's not a good person, morally speaking, and on principle. He does not support any kind of human rights. He doesn't support, he supports all the autocratic dictatorships around the world. You can't find a single thing. Professor, you're sitting next to a very, very extremely pro-Trump person. Well, I think on one hand, this is where I would agree with him, that he may hasten the collapse of the American empire. That's the only virtue that he may have, in my view. Because this is very important for the world. And he does it not because he believes that America should decline. It's because he is a transactional president. He does not understand the imperatives of how American empire works. And he is so self-centered and does not care about, he only cares about his interest, his personal interest. And he's becoming a leader of a cult. I think that's why the establishment is horrified with him. Somebody like my friend here, Mushahid here, he understands the dangers of American empire. Therefore, he hopes that Trump will be able to hasten the collapse of that American empire because of how it has damaged the whole world. And with that, I agree with him. But whether Trump can act is a good person or a moral person or someone who can actually do this for good moral reasons, absolutely not. This guy has proven over and over again that's not what it's about. crash हुआ ये देखा आपने, ये क्या था? ट्रंप ने ये है कि वो बाकी प्रेसिडेंट की तरह मुनाफिक नहीं। बाकी दे टॉक्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। हर एक ने कू डिटास भी किए हैं, असैसिनेशंस भी किए हैं। इसने बात की कि दिस इज अ वेरी करप्ट सिस्टम, दिस इज अ वेरी करप्ट एस्टेब्लिशमेंट, दिस इज डबल फेस सिस्टम। ये किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं हुई थी टू से टू द CIA एंड द पेंटागन कि आप लोग नालायक हैं, अमेरिकन जनरल्स आर इनकॉम्पिटेंट, द CIA हैज कमिटेड क्राइम्स। ये किसी की जरूरत नहीं हुई थी। आई थिंक वी मस्ट हैंड इट टू देम, क्योंकि अमेरिका जैसे सिस्टम में दे गो बाय द प्ले बुक, वॉशिंगटन प्ले बुक, प्रेसिडेंट और नो प्रेसिडेंट। वो पुतिन ने ठीक कहा था। 4 former CIA directors. I mean, they are on the list. Leon Panetta and Mike Pompeo and blah blah. No, coming. आपने वो एक्सीडेंट देखा है जो क्रैश हुआ है? हाँ, बड़ा अजीब सा हुआ है कि वो हाई सिक्योरिटी जोन में जहाँ व्हाइट हाउस भी है, वहाँ पेंटागन भी है, और ट्रंप के आने के एक हफ्ते के बाद इतना इंपॉर्टेंट क्रैश होता है जो कभी नहीं हुआ, और वो भी इसमें वन इन्वॉल्विंग द पेंटागन VIP हेलीकॉप्टर डिटेल। तो ये जरा थोड़ा सा वो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट तो और कहेंगे कि जी वो तो मैसेज था ट्रम्प के लिए, लेकिन ट्रम्प खुद भी कह रहा है कि वो हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ, जो कि एक्चुअली आई एम नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट। लेकिन अजीब सा। अच्छा, मुझे ये बताएं प्रोफेसर, हाउ यू लुक एट पाकिस्तान? Pakistan is a very important Muslim country. Pakistan has the potential to actually, along with Turkey and possibly Malaysia and Indonesia, to lead a new
alliance between the Muslim countries and possibly even build a third power. But Pakistan has been very much consumed with its own internal affairs and hasn't been able to live up to its potential. And that's very, very regrettable. I am very optimistic that the youth, through this visit that it's been now almost a week, that I see there is a great potential among the youth in Pakistan, and that they really care about the status of their country. They're trying to break free from this logjam that you have internally here and start to chart a new future. And I certainly hope that the political class in this country would be able to live up to that potential. मैं देख रहा हूँ next 10 years में 5 Muslim middle powers. अच्छा. Pakistan, Saudi Arabia, Iran, Turkey, Indonesia. They will be playing key roles in their respective areas. So Pakistan is a very key player in the most crucial part of the world. तो हमारे पास strategic space है और हमें we should set our own house in order and seize this new opportunity. लेकिन उन्होंने mention किया कि internal जो हाँ वो तो है, वो मतलब है कि सारा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम we need a healing. Yes, मेरे ख्याल में वो अब दोनों जो है ना जो state power और street power का तसादम हमने देख लिया. नहीं अब तो होने जा रहा है, अभी तो और झगड़ा मेरे ख्याल में सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे पर वो नहीं खत्म कर सके. स्टेट पावर स्ट्रीट पावर को नहीं दबा कर सका और स्ट्रीट पावर स्टेट पावर को नहीं कर सका. तो इसलिए मेरा ख्याल एक रियलिटी और बड़ा जरूरी है, ये एक हीलिंग टच की जरूरत है, दस्ते शफा की जरूरत है और उसमें सबको कहें जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान रिहा किया जाए और उनको आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान का जो असली पोटेंशियल है हम रियलाइज़ करें हम कितने क्रूशल एरिया में हैं. वरना छोटी मोटी ये इश्यूज आते रहेंगे, कभी बलोचिस्तान कभी खैबर पख्तूनख्वा, ये नेवर एंडिंग हो जाएगी. फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मीडिया, फिर पीका को फलाना. ये तो फिर ये बुश फायर्स जो हैं ये आपको कंज्यूम कर देंगे और रिजल्ट होगा जीरो इन्वेस्टमेंट. तो वी शुड लर्न दोस लेसन्स. नहीं मुझे आप ये बताएं कि आप 3 ब्लॉक देख रहे हैं या आप 2 ब्लॉक्स देख रहे हैं? मेरा व्यू डिफरेंट है, ब्लॉक्स की बात नहीं है. मैं कह रहा हूं चाइना, अमेरिका एंड चाइना अंडर ट्रम्प एंड देन देयर इज अ नॉन लाइन. नहीं देयर विल बी एन एंगेजमेंट. कैसे? न्यू कोल्ड वॉर नहीं होगी अंडर ट्रम्प. मिडिल पावर्स है ना. ट्रम्प ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, वो चाइना के साथ एंगेज करेगा. पहले बुली ब्राउबीट करेगा, वो फेल होगा. कोल्ड वॉर अमेरिका कैन नॉट विन अगेंस्ट चाइना और चाइना ऑल्सो डज नॉट वांट अ कोल्ड वॉर. तो वो एंगेजमेंट होगी जो फ्रेंडली कंपटीशन है, लेकिन उसमें दोनों का कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर मेरे ख्याल में कोई अकोमोडेशन हो जाएगी. Don't you think, Professor, what Trump is saying and sending the message to the world is either you are with us or against us? That's exactly his message. So how can a country it's not that simple. balance? He is basically not that simplistic. he is balance between two. No, he's basically saying that America is first, America's and therefore, if you want Accept to my terms. if you want to prosper, you need to listen to my dictates. Yeah. If you don't, you'll be sanctions and you will be ostracized. And basically, that's what he's doing to Iran. That's what he wants to do to any country that does not agree with him, whether it's in Latin America or other places, which is pretty hard for a great power to use, because what it does is that this kind of alienation would turn these countries into the arms of China or other great powers. So it's certainly not a traditional American policy. It has turned to this since it's becoming unipolar, because it was not fearing any kind of competition. Now in the age of China, of the rivalry with China, this is going to be a very dangerous policy, because this is what it did to Russia. Russia historically also had its problems with China. Once it took the position with the Ukraine war, in all the things that they did against Russia, Russia was turned, and now it becomes a full partner with China. That is against the United States' interest, as some of the establishment sees it. And I think going back to the point that Shahid was making, it's very important to realize that we really have that potential. We talk about Pakistan, Iran, Turkey, Indonesia, these major countries in the Muslim world. If they can become truly independent and value that the future is much more important than just short-term interests, we can actually, through 1 or 2 generations, make a huge problem and impact the future of the world order if we know how to exploit the situation. We have that potential. We can complement each other. Each country has a positive, has something to contribute, but we have to be above our narrow national interest. We have to think of the interest of the whole ummah. And that is something that is missing in the political dialogue, in the political class. Everybody just thinks of Pakistan only, Turkey only, Saudi Arabia only, Nigeria only, and so on and so forth. If we go back to the model that Najmuddin Arbakan was trying to
promote when he was Prime Minister of Turkey. It's a model that can actually, if taken seriously, make a huge impact on the future world order. Shahid साहब, final thoughts. कोई नया ऑर्डर भी नहीं है सामने. नहीं, नए ऑर्डर की बुनियाद रखती गई है. बुनियाद रखती गई. चाइना ने नया, देखें ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 150 ममालिक, $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट 3000 प्रोजेक्ट्स में. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रीजनलिज्म, ट्रेड कनेक्टिविटी. तो ये आगाज तो कर दिया. अमेरिकन मिलिट्री ऑर्डर जो है, इट्स स्टिल ओल्ड फैशन, सिक्योरिटी सेंट्रिक, मिलिट्री डोमिनेटेड. चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, 2 डिफरेंट विजन्स हैं. चाइना के पास वो पैसा है जो अमेरिका के पास नहीं है. और चाइना के पास वो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी हैं. ओल्ड ऑर्डर इज स्टिल देयर. ओल्ड ऑर्डर इज डिक्लाइनिंग. और ट्रंप को मालूम है कि ही इज प्रिजाइडिंग ओवर अ डिक्लाइनिंग अमेरिका. अमेरिका जो जवाल हो चुका है. इज चाइना रेडी? चाइना इज रेडी. कि उसकी पोजीशन ले. बिल्कुल पोजीशन. मैं नहीं कहता कि चाइना का वो नहीं करता ग्रैब. चाइना एक मुल्क नहीं, सिविलाइजेशन है. बड़े आहिस्ता आहिस्ता फूक फूक के कदम लेते हैं. वो खुद कहते हैं कि रास्ता हमवार हो रहा है हमारे लिए. जो बाकी यूरोप का कहाँ था, यूरोप का डिक्लाइन हो गया. इट्स अ नॉन फैक्टर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अमेरिका जो था इतना डोमिनेट करता था. आप भी एग्जांपल ले लें पैलेस्टाइन का, मिडल ईस्ट का. छोटा सा है हमास या रेजिस्टेंस, उन्होंने उड़ा के रख दिया. इतनी फायर पावर, इतनी लाइव जेनोसाइड, दे कुड नॉट डिफीट हमास. तो इसका मतलब है माइट इज राइट वाला प्रिंसिपल फेल हो गया. राइट इज माइट. तो इट्स अ लेसन फॉर अस इन कश्मीर आल्सो कि ये साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ. Professor, the final question. In the beginning, you said that you don't believe on the two-state solution. You don't think there is going to be two states, either a Palestinian state or Israel. No, I mean there is Israeli state. If I ask you to bet on a greater Israel or a total Palestinian state, there would not be, or another. Another fighting Greater war, Israel is dead now. It's a very fragile ceasefire. Well, what we're having today, we do not have a Palestinian state, and I don't think we'll ever have a Palestinian state. You may have a truncated semi-state, but I don't think that's even in the cards. I think what we're having today is an apartheid regime in mandated Palestine, in the whole Palestine from the river to the sea. That project, that enterprise, that Zionist project is in its decline. Eventually, it will be dismantled. Until we reach that point, there will not be a Palestinian state. We're going to be some sort of a conflict. That conflict will become global conflict. I think in the course of the Palestinian struggle, we've gone through 5 stages. This 5th stage that we'll enter is the stage which will make this conflict global. Palestine now has become the key, the compass, the symbol of the struggle of world class, of the word poor people, of the word oppressed people against the hegemony of the West, the hegemony of the imperialists, the hegemony of the Zionists. That global struggle is going to, at the end, dismantle this whole regime. What comes after it is going to be basically a system. It could be called Palestine, it could be called anything else, but the people who believe in the Zionist project will no longer be in Palestine. Those people cannot understand that they can live in a society where people are equal. This is a supremacist mind, a racist mind, a settler colonial mind. Like the French, at the end, when they defeated in Algeria, they went back to France. Every settler colonial movement, when it is defeated, goes back to where it came from. That's what's going to happen. That doesn't mean you're killing every Jew. We're saying that this problem came from Europe. Europe was racist against its Jews. It wanted to solve 2 problems with one. It took its excess Jews, put them in Palestine in order to solve the Jewish question. And with that, it wanted also to solve the Eastern question, which is whenever the people in this part of the world, the Muslims in this part of the world, they were defeated by the Europeans, by the Crusaders, they can again regain their strength and push them back. They wanted to put this foreign entity so that they will always be weak, exhausted, fragmented, divided. Now, once that project is ended, once that project collapses, then we can tell them if the Jews cannot be accepted in Europe because they're racist, they can live in a part of the Muslim world like they did after Islamic Spain in 1492. They can go between Morocco and Indonesia, but not as a sovereign state.
not as a colonial state in the heart of the Muslim world at the expense of Palestinian rights. That will not happen. I think over time, if anything we learned from October 7th, that with the resistance being steadfast and resilient, that this project cannot sustain itself. It will have to go. It is an apartheid genocidal regime. This fact people did not understand, did not see it. But now, after 15 months of genocide, thousands of killed people, of this 2 million of displaced people, and so on and so forth, we can see that this ideology cannot be sustained and cannot exist. मुशाहिद भाई, आखिर में हम पहले जब आपके साथ बात हुई थी तो ये हमने कहा था कि मेरा तो कम से कम ये है कि जो भी नई जियो पॉलिटिक्स जन्म लेगी उसमें गज़ा से ओरिजिनेट करेगी, ये जो चल रहा है सारा मामला, और वही होता देख रहे हैं हम। जो नए ऑर्डर मैं समझता हूँ जो तनाज़े चल रहे हैं जो तारीख के हवाले से, उसमें दोनों को मैं शामिल करूँगा, क्योंकि दो खिते बड़े अहम हैं ग्लोबल साउथ के, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया। मिडल ईस्ट में पैलेस्टाइन, जनूबी एशिया में कश्मीर, और जब तक ये मसले हल नहीं होंगे अमन और सलामती हमारी ज़िंदगी में तो कायम नहीं होगा। और ये जो फीलिंग थी ना कि जी पैलेस्टाइन इशू डज नॉट एग्जिस्ट, कश्मीर इशू शुड बी बरिड, चलें जी कॉम्प्रोमाइज करें, दैट डज नॉट वर्क। वो पीपल रेजिस्ट करते हैं ना। इट्स नॉट अबाउट टू द अरब रेजिम्स टू डिसाइड, इट्स द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान टू से कि हम कश्मीर का सौदा कर लें इंडिया से खुफिया तौर पर। कश्मीरी अवाम नहीं मानेंगे, दे आर द मेन पार्टी टू इट। और वैसे भी जो गलत काम करेंगे जिसकी बुनियाद नाइंसाफ़ी हो, जैसे हज़रत अली ने फरमाया था ना, कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, नाइंसाफ़ी और जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं चल सकती।